Hello, friends. I hope you all are fine and doing well in your life. All of you, look at here. This is a image of a balance. यह एक तराजू का पिक्चर है. Here it show two different side. One is right hand side, another is left hand side. एक दायां पक्ष या दूसरा बायां पक्ष को दर्शाता है. And how do we use this? You might, I think, almost all of you might have been seen in your market close to your house that they are using different kind of balance. Earlier they were using, still now the fruit vendors are using the balance. तराजू अभी भी जो फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचने वाले जो शॉपकीपर्स हैं वे लोग अभी भी सिंपल नॉर्मल जो तराजू होता है जो पुराने ज़माने से यूज़ किए जाते थे उन तराजुओं का इस्तेमाल करते हैं. बट नाउ डेज वी आर सीइंग दैट न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटराइज और न्यू टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल बैलेंस इट हैज़ कम, इट हैज़ टेकन प्लेस, इट हैज़ रिप्लेस द ओल्ड बैलेंस. पुराने जो तराजू के जो ट्रेडिशनली थे उनको अभी न्यू जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस उसने उसको रिप्लेस कर दिया है मोस्टली. जनरली अगर हम लोग देखें मार्केट में तो ओके. सो हियर वी टेक द मेजरमेंट the what is the numbering 1 kg 2 kg that measurement we put here, and this side we take the weight of the object. जो भी ऑब्जेक्ट है जो काउंट नहीं कर सकते हैं उनका यहाँ पे वज़न हम लोग पता लगाते हैं. तो आज हम इस क्लास में ये जानेंगे कि वज़न और द्रव्यमान, weight and mass, what is difference between weight and mass. Today we will study and understand the concept clearly. So let's start. First of all, here mass is defined as the amount of matter in an object. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मास है इसको परिभाषित किया जा रहा है कि what is the amount. For example, if I talk about this power bank, it has some weight. How much quantity, how much amount this power bank has contained in itself is called the mass of this power bank. If I talk about this cell phone, it has its own mass, it has its own amount, so that is called mass of this cell phone. Okay, if I talk about this pen, so it is different from all these two, so it has its own mass, it has its own amount, so this is called मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. कोई भी वस्तु कितनी मात्रा कितना कितना द्रव्यमान अपने अंदर संग्रहित करता है. किसी वस्तु का अपना कुछ अमाउंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड मास. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. अगर हम बात करें इस सेल फोन की, अगर ये पृथ्वी पे रहे या किसी और देश में रहे, या नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, कोई ओशन हो और कहीं पर भी, सो इसका जो मास है इट विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम कांस्टेंट, इट विल नेवर वायरीज. ऑल राइट. इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट इज ऑल्सो defined as measures of inertia. This mass is also defined the measures of inertia. Inertia is a property of all matter, whatever matter I have right now. For example, if we talk about this pen, this cell phone, this power bank, and the weight of and the mass of this book. So this all objects are example of what? Matter. So this inertia, ये जो जड़त्व है, ये सभी पदार्थों का जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया उसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है. ऑल राइट.
अभी ये इनर्शिया होता क्या है उसके बारे में, जड़त्व होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ड्यू टू इनर्शिया अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन मोशनलेस and a moving object tends to continue to move at a constant speed in the same direction. Very important. इस जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन पे है, अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, so this to both object it will remain always due to inertia. Keep in mind, due to inertia these objects will tends itself to remain in a constant position, in a rest position. It will not move here, there, anywhere. It will remain, it will try to remain itself in a constant position, in a same position, means rest position. But those objects which are in moving, for example this object is moving, this pen is moving, so due to inertia the object which is in a motion, it will remain always in motion until and unless some external force, for example that this pen is in motion and I am applying some external force here, one stopper I am applying here, so it will stop. For example the frictional force acting on this book, on this surface, it will also try to bring it in a rest position, but inertia will help it to remain in a speed, remain it in a motion. I hope you all understood. Next, weight is the force experienced by the matter. We have studied mass, now weight. So weight is the force experienced by the matter due to gravity. जो गुरुत्व के कारण एक बल जो यह अनुभव करता है उसको ही कोई भी मैटर, गुरुत्व बल के कारण, अगर गुरुत्व के कारण एक बल अगर ये एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वजन बोलेंगे। ये द्रव्यमान और ये वजन। ओके, इट देयरफॉर वैरीज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है, उसके अनुसार ये वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। वी विल स्टडी लिटिल मोर विद अ गुड एक्सप्लेनेशन। वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए वन काइंड ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई किया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है, by the planet or a satellite on which it is located. For example, I am here on this earth, so some force is exerted on me, that is called weight. It depends on the place of the object. As I told before, it will weight always depends on the place of the object, whether this pen is on the earth or on the moon. If it is in the moon, so the weight will varies. However, mass remains the same wherever the object is placed. जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि मास हर जगह पे एक समान रहेगा, या तो भले ही आप बात कर ले इस पृथ्वी की या मून की, चंद्रमा की, यह हर जगह पे सेम रहेगा। On the earth, as the gravity always remains the same, weight like mass never changes. However, if the object taken to the moon, it will weigh less there than it did on earth, as the gravity on the moon is less than that on earth. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो चंद्रमा पे कम हो जाएगी। इन द interstellar space, this object will weigh nothing as there is no gravity in space. अगर अंतरिक्ष की बात करें जहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, there will be no weight. On the
other hand, mass always remains same the object on the earth, moon or in the space. As we have studied the difference between weight and mass, I hope so you all understood the concept. मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को द्रव्यमान और वजन का जो अंतर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. If any doubt, you may ask your question in comment box. Thank you and have a nice day.